Reddy Sahab, I really believe one statement would make sense to each one of us, and the most important statement from a man coming is, note it down, the health and the wealth of the family is in the hands of a woman. I am very much sure nobody will have a doubt about it. At this time, I am discussing it with you, but I would want you to text and if possible, call your women, because आप और हम सब शरीफ husbands हैं. वो जो परोस देती है हम लोग खा लेते हैं. जब वो खाने के लिए डांट भी दे देती है उसके भी हम खाने के लिए तैयार रहते हैं. तो it's important that we start with that note. I am here to talk about diabetes, एक ऐसी बीमारी which touches each one of us. Every one of us have somebody or the other in our family, in our community who's got a diabetes. A disease which kills one person every 6 seconds. So in 1 minute, the 10 people will be no more in this world. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, whenever we go on further, proper introduction is needed. साहब ने जो भी बोला था, that was very fine to hear. I am a Delhiite from UP who's born and brought up there. After that, I've had a blessed experience of working in CMC Vellore, where I did my graduation, Rai Velur. Dantarvata, MD Medicine I have done from Ludhiana. So Punjab experience for 5 years. And Akanundi I have driven directly from Ludhiana till Hyderabad. From last 1.5 decades, I am working in the city of Nizams. And from last 2 years, I am in one of the most beautiful community in the world, that is Lanco Hills. And I sincerely believe we need to have a big round of applause for one of us all. Before I go into deep discussions, let me just ask you and request you, please take a pen and a pencil or paper or on the your own notepad and write it down. It is needed. It is needed to save that one life in your family. It is needed because we realize that one right statement at the right time not only saves one person, it saves one family, it saves one community. And that is what is diabetes all about. Diabetes affects everybody, especially in Hyderabad. And we need to understand that with respect to have some kind of dialogue rather than the monologue. Why I gave my introduction? Because I'll be very happy that to converse with you all in Hindi, Telugu, Tamil, Punjabi, Bhojpuri, and even to some extent Bangla also. So either doubt unte anything which you want to converse, it will be good. A dialogue is better. I would want to give you the statistics. Every 6 seconds, we lose one person from diabetes. I had been to United States of America for a diabetic conference. And it was always nice. They are very warm people. And they said, hello, Dr. Ashish. We are very happy to have somebody from the diabetic capital of world. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये मुझको इनवाइट कर रहा है कि मेरे को थप्पड़ मार रहा है. We all understand. So we are so happy to have somebody from the diabetic capital of the world. But then he was right. He was absolutely right. You and me are living in a diabetic capital of world. Now with these notes, I see a few youngsters also, and it will be nice to hear. Diabetic capital of world, India. Diabetic capital of India? Hyderabad. Sorry? What is the reason? We'll discuss this right now. We'll discuss the why the. Yes, diabetic capital of India is Hyderabad. And जो भी हैदराबाद में 6 महीने से ज़्यादा रह चुका है, then he does not remain a Delhiite, he does not remain Mumbaikar anymore. More than 6 months, तो साहब you become an Hyderabadi. ठीक है, आपके thoughts process, whether you know Telugu or you do not know, but Telugu लोगों की मिठास आपको ज़रूर पता है. So we are here to discuss that out. मीठे बनिए साहब अपने स्वभाव में, अपनी बोली में, अपनी भाषा में, लेकिन खाने में साहब जितना आप रूखा सूखा फीका रखेंगे वही ज़्यादा ज़रूरी है. I am quoting one of my very great friends, one of the very senior most, one of the very blessed cardiologist, Dr. Badri Narayan sir from Apollo Jubilee Hills. He says, साहब 20 या 30 साल की उम्र के बाद रूखा सूखा फीका. I really want attention of men, because of men, and more than men, I want attention of women, because poor husbands, we just eat whatever you give. So this is important. And how somebody asked me, so that we do not want to prolong it on one side monologue. Reasons क्या है diabetes के? Multifactorial. Reasons है technology. Reasons है जो progress है.
Everything comes with a price. And everybody asked me the same thing. Sir, 50 साल पहले तो इतनी diabetes नहीं थी. And then we have WhatsApp Gyan which keeps going on. The degree of FBS, the value has been decreased. That's why everybody is becoming diabetic. I think you need to be careful. I have two boys and I'm very much sure I see a lot of parents out here and you can use this quote. Google, science, technology and money. Google, science, technology and money. They're good servant, bad master. They're good servant, bad master. So just be careful before you pick up any video and start following that. 9 things will kill you and me. And if anybody wants to record it and write it down, it's good to understand. 9 things you and me need to stay away to live for 100 years. Number 1 is smoking. Yes. Every cigarette decreases life by 11 minutes. Spirits, yes. Alcohol has got direct connection with lot many things. Most important things, third is sugar. मीठा बोलिए, मीठा स्वभाव रखिए, मीठे से दूर रहिए. It's very very important. गणेश पूजा है, क्रिसमस आ रहा है साहब, मैं एक टुकड़ा लेकर के आई फील वेरी वेरी हैप्पी. क्यों? क्योंकि एक रसगुल्ला खाना है, आप जरूर खाइए, लेकिन उसके बाद आप डॉक्टर सुधीर कुमार सर की तरह एक 10 किलोमीटर की वॉक होनी बहुत जरूरी है. See, there is no pain, no gain. आपको there is always a price to pay. So at this time, 50 साल पहले इतनी बीमारी क्यों नहीं थी? 50 साल पहले ऊबर नहीं था, ओला नहीं था, हमारे पास एसी नहीं था, हमारे पास रिमोट नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, हम लोग बैठे नहीं रहते थे. We were not couch potato. Because somebody asked me, he said, what is the reason? The fourth thing which is the reason for diabetes is sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle is a reason for diabetes, no doubt about it. The fifth thing which is a reason for diabetes is stress. आजकल साहब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है. We have to understand, पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले इतना इंफोडेमिक नहीं था. Pandemic did not kill, infodemic killed more. Infodemic killed more. हर एक सेकंड में साहब we are seeing the reels. आजकल तो फेसबुक में रील्स चलती है. एंड वो मोरबी ब्रिज गिरा तो सेम गिरने वाला ब्रिज हम लोग 10 बार दिखा रहे हैं. स्ट्रेस इज द बिग फैक्टर. सॉल्ट इज द बिग फैक्टर. जितना सॉल्ट आपको और हमको पर डे पूरे दिन में खाना होता है, वी ईट इट. डू यू नो दैट वी साउथ इंडियंस, नाउ आई कॉल माई सेल्फ साउथ इंडियन ऑल्सो, हम लोग सुबह के ब्रेकफास्ट में पूरा दिन की रिक्वायरमेंट खत्म कर देते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच वी हैव टू ईट सॉल्ट पर डे? एनीबडी? 1 tablespoon. 1 tablespoon. I'll say it as a teaspoon. Tablespoon is 15 ml. Yes. And a teaspoon is 5 grams salt. You and me need it every day. That is finished with 2 dosas if you are having it in the morning. The pachadi. Yes. So now the 6th S. Number 1 is smoking. Number 2 is spirits. Number 3 is sugar. Number 4th is salt. Number 3 is spicy food. Antera, we all love to go. I know we all, it's nice place. Or Rayalaseema, Ruchulu, too good to have it. No doubt about it. अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप. जितना ज्यादा मसालेदार खाना बनाएंगे, उतना ही ज्यादा फिर हम उसमें राइस भी ऐड करेंगे. भाई मसाले को बराबर करना ना. And that is where you are making yourself my patient. 15 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साहब, and people laugh when I say. People laugh when I say, I wish I can see ICU and emergency empty. Take my words and I mean it. I wish if I can see ICU and emergency empty. जब कभी भी I was in Yashoda, right now I'm in Apollo, जब कभी भी अपने friend से बात करता हूँ, sir your wish is very good, but take my words, patient only wants to come to ICU and emergency. They don't want to listen to you till the time they get a heart attack, paralysis, kidney failure, and that is a fact. सबसे ज़्यादा अक्ल ना साहब वो क्या कहते हैं ना, बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से आती है. तो एक बार जब हार्ट अटैक हो गया उसके बाद अब सब बंद करेंगे. बिफोर हेलमेट एक्सीडेंट के बाद पहनने की जरूरत नहीं, एक्सीडेंट से पहले पहनना है. दैट्स व्हाट मेजॉरिटी ऑफ अस डू इट. लॉट ऑफ पीपल हैव अ फेथ. साहब आप जिंदगी में किसी पे भरोसा कर लीजिए, पैसे पे भरोसा नहीं कर सकते. लॉट ऑफ पीपल हैव अ फेथ. आई हैव एन इंश्योरेंस, आई विल गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट. I have an insurance, I'll get the best treatment. Now tell me very honestly, one BMW which has never had any accident,
that is better, or one BMW who's had a bad accident and after had the best servicing done. आप कितनी भी बेस्ट सर्विसिंग करा लीजिए, it will not be equal to pre-accident zone. That's how the body is. Don't take care of heart after you got a heart attack. Don't take care of your brains after you got a CVA, paralysis, kidney failure. 9S की बात करूंगा. Smoking spirits 2, salt, sugar, spices 3, sedentary lifestyle 6, stress 7, 8 is the sleeplessness. 6 to 8 hours of sleep is what is needed. हमारे लीडर्स 3-3.5 घंटे को भी प्रमोट करते हैं. आई विल टेल यू वन थिंग, प्लीज बी नॉर्मल. आपकी और मेरी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एंड दैट क्लॉक नीड्स टू बी मेंटेन्ड. सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डायबिटीज मोर? वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग द टेम्पल ऑफ गॉड दैट इज आवर ओन बॉडी. रात को 2 बजे भी सर जोमेटो और स्विगी से खाना आ रहा है. सर योर बॉडी इज नॉट मेंट टू बी लाइक दिस. डू यू नो व्हाट इज अ 3rd degree टॉर्चर ऑफ पुलिस? आई थिंक पुलिस साहब बैठे हुए हैं, डीसीपी साहब, तो इट्स वेरी अपेरेंटली, एंड यू हैव टू करेक्ट मी, कि सर वो सिर्फ 30 फीट से या 20 फीट से एक ड्रॉप पानी डालते हैं कि सर फिर वो बंदा सोता नहीं है, बस और कुछ नहीं होता. एक बंदे को आप सोने मत दे दीजिए, एंड दैट इज द बिगेस्ट टॉर्चर पॉसिबल. You know, that's one thing to understand. So sleeplessness, lot of people say, sir, and आजकल सर आप और हम लोग वो रैट रेस में हैं. 8 घंटे में मैं इतना कमाता हूँ, 2 घंटे और काम कर लूंगा तो मेरे को 20-30% इंक्रीमेंट मिल जाएगा. सर, लाइफ इज ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. 8 hours of sleep, 8 hours of work, 8 hours of family and friends. 8 hours of family and friends. 8S की मैंने बात की थी, तो उसमें आप ये समझ लीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू कंट्रोल योर शुगर्स. अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है? आई टेल यू व्हाई माय पेशेंट्स गेट हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर. क्योंकि वो खुद आते हैं, फैमिली के साथ नहीं आते. If a man comes to doctor without his wife, how many times he'll go to her and tell her, you आप ऐसा खाना बनाओ? वो नहीं बना पाएगा. Doctors are bad communicators and husbands are horrible communicators, isn't it? To go back and tell कि सर आप ये खाना नहीं. If you want a diabetes treatment, it's a multifactorial disease and it requires multi-dimensional approach. It requires the involvement of whole family. ये नहीं कह सकते साहब कि डॉक्टर साहब ने बिरयानी मना करी है तो आप मत खाओ, हम तो खाएंगे. नहीं, it doesn't work out that way. It doesn't work. We all are humans. अगर हेल्थ होनी है तो फिर everybody has to follow the same thing. And दोस्तों की ज़रूरत के बारे में मैं क्या आपको बोलूँ? मेरे बहुत अच्छे खासे मित्र हैं, because all of you are listening. The best way to handle stress and the best way to control stress is spending time with friends besides the medicines. मेरे एक बहुत ही आला दोस्त ने, कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, कार्डियोथोरेसिक ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं. उनका ये कहावत है, उन्हें अपेरेंटली कहा गया कि उनके ओटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, क्या लिखा था साहब? जो दिल खोल लेते यारों के साथ, जो दिल खोल लेते यारों के साथ, न खोलना पड़ता औजारों के साथ. So yes, having friends in life are very, very important. You must come out and every day you must meet CS Reddy Sahab on the, on the running floor. It's important, Sahab. Exercise is very, very important. And the 9th S, which is killed the maximum people, probably you wouldn't like to accept it, is self-medication. Self-medication. In pandemic time also, I have had multiple experiences. Sir, इधे चेस्ते मंची दिक्कता, इधे चेस्ते मंची दिक्कता साहब. एक 20 साल, 25 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस वर्सेस 20 मिनट्स ऑफ गूगलिंग और 10 फ्रेंड्स ने बता दिया ये बेहतर है, वो बेहतर है. सर ऐसा करेंगे, सर वो ये दवाई चल रही, कितनी एक्सपेरिमेंटेशन हुए, मतलब कह नहीं सकता हूँ मैं. आई डोंट वांट यू टू हैव अ नेगेटिव पिक्चर. सर कॉकटेल थेरेपी ले लेते हैं, ये काम कर देते हैं, वो काम. रिलैक्स. यू डू नॉट रिक्वायर अ ट्रीटमेंट. Just relax. Panic has killed, infodemic has killed millions, if you ask me honestly. आपको
लंबा जीना है, हंसते खिलखिलाते जीना है, खुश रहना है. Take my words, you all are seniors to me, a good number of you will accept it. 3 लोगों की बात बिना क्वेश्चन किए सुन लीजिए, आप जिंदगी भर खुश रहेंगे. 3 लोगों की बात. आपकी फाइनेंशियल हेल्थ विल बी टेकन केयर ऑफ, मेंटल हेल्थ विल बी टेकन केयर ऑफ, स्पिरिचुअल हेल्थ विल बी टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग. आप जिंदगी में हंसते खिलखिलाते रहेंगे. 3 लोग कौन है? हु टॉक द वेरी रफ. नंबर 1 is a boss. He will talk always the rough, but keep saying yes to him. Take my words, you will be happy in your workplace. Number 2 is a BV. Boss, BV and Vaidya. 3 log है साहब. Isn't it? That's very true. They always want good for you. उनकी बात जरूर कड़वी होती है. उनकी बात वैद्य, डॉक्टर. BV boss वैद्य. BV, the boss will take care of your financial health. BV will take care of your mental health, and doctor will take care of physical health. So ये 3 चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं. And at this time, I will be very happy if you would want to ask me any question. I'll be very happy to address. To come to the point, as a diabetic, how to stay fit. There are 10 hundreds to be followed. Number 1 is fasting blood sugar should be around 100. Maintain your fasting blood sugar around 100. If you're less than 40, then it should be less than 100. If you're more than 40, it should be around 100, 110, 120. If you're a non-diabetic, check your sugars once in 100 days. Meeku sugar ledu. So 100 days ku sari sugar test cheyandi. Induku because you stay in a diabetic capital of world. Meeku sugar unnadi, you have a diabetes 100 times in a year. వారానికి 2 సార్లు షుగర్ టెస్ట్ చేయాలి. హఫ్తే में 2 बार. Sir, 100 times sugar, it's not that easy. It's not that tough at all. It's just a 1-minute job. And I really believe it's a responsibility of the sons and the daughters of the family to do that. So fasting blood sugar should be 100. If you're a non-diabetic, check sugars once in 100 days. If you're a diabetic, check sugars 100 times in a year. Your blood sugar should be, your blood pressure should be 120/80, that is again 100. Mean arterial pressure should be 100. Your cholesterol should be less than 100. Maintain your cholesterol 100. LDL cholesterol. Finally, सबसे अच्छी चीज जो मैंने लैंको में देखी है साहब, आपको 100 साल जीना है तो 100 मिनट्स तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. No pain, no gain. Isn't it? Can everybody repeat along with me? No pain, no gain. Health. No, because I believe there are a few MBAs people also sitting out here. We have a banker here, so that statement should come up. A proper health management requires proper planning. Yes or no? Yes. Proper wealth management requires wealth planning. Proper health management requires health planning. Failure to plan is a successful plan to fail. Failure to plan is a successful plan to fail. You must plan how to live for 100 years. See, the biggest problem is, if you want, because Baga, we have a lot of Telugu crowd. What is a big thing which kills Telugu people? Ippudu I am also a Telugu person, so it's okay. And one statement is specific is terrific. I like talking specific. To the point, you should discuss. 2 words which has killed maximum Telugu people in the last 2 pandemics, or the main reason for death is that only. What is the one word which kills majority of us? Avasarama. Any అవసరమా? ఏది సార్ ఇక్కడే మంట ఉంది సార్, ఈసీ చేయండి, అవసరమా? We will admit you, sir. అవసరమా? ఇది కమర్షియల్ డాక్టర్, కమర్షియల్ హాస్పిటల్, అపోలో బాగా కమర్షియల్. అమ్మా అవసరమా? April 18th, 2019, before COVID pandemic, this boy, why I'm giving you the names of organization, only clarity kosam and there is no negativity. 18th April 2019, 23 years old boy, after he had a party, he came to Sunshine Hospital, Secunderabad. Sir, what is the problem? Ikkade manta undi. This is good. Okay, do an ECG, we have done, ECG is normal. Immediately we told, okay, it is told to him, get admitted. Because this I am reading in his case sheet. Okay, I am seeing him on April 19th. In that it is written Lama, left against medical advice. I am seeing him in April 19th after 20 hours in Apollo Secunderabad in emergency room. The same ECG which is yesterday normal, today is absolutely hardcore heart attack signs are there. And this I am reading it,
next to his dead body. 23 years old male. The only reason was, he said, sir, naako sugar le do, BP le do, smoking alcohol le do, all the 4 reasons. So avsarama. And which he forgot, and why I knew him, because his own father was a heart attack patient who was getting treatment at Apollo. The family history is very important. My mother had diabetes and she died of heart attack. I will have a diabetes. I will have a heart attack. Adi clarity undali. Use this word avsarama anywhere, but not in front of a doctor. I will tell you the weakness of a doctor in Andhra Telangana. What is the biggest weakness of a doctor? I am the rarest breed. Doctors are very bad orators. Valke communication emi raadu. Whatever you will say, they will say yes. Sir, avsarama leduma talli akkarledu tarvata chuddam. Sir, ఇది అక్కర్లేదు కదా, they will say no, అవసరం లేదు, తర్వాత చూడండి. Do not put your words into doctor's mouth. Do not put your words into doctor's mouth. You will hear what you want to hear. You will not hear the honest opinion. Honest opinion a doctor gives in the first second where he is hesitating, but he writes it down. Good number of doctors make sure they write everything. So they will write 2 ECG, admit, 2D echo, khatam. You are the one who will say, sir, avsar ledu kada, tarvata chuddam kada. They'll say, okay. That is where you're digging your grave. Number 1 word which kills Telugu people is avsarama. And number 2 is again bigger, deadlier word is nenu anukunna. Anytime you write, I have given, aap kisi bimari ke saath aaye, maine aapko dawai likha. Then I have written investigations also. After I have written, the medicine, patient comes after 5 days with blood reports. Sir, nenu anukunna, because you will write the treatment after the medicine, seeing the reports. So I didn't take any treatment for 3 days. You must communicate with the doctors properly. I know they will not give you too much of time. If you ask stupid question, they will not give you time. If you ask the to the point, clear-cut question, they will give you time. When you're coming to any doctor, please write your question and come and ask to the point. They will keep answering you. But if you start making question then and there, you will lose it. For heaven's sake, do not have this avsarama and nenu anukunna attitude. Ki mujhe zarurat, whatever way we understand the whole thing. Your doctor will keep you away from ICU and ER. डॉक्टर से आप 4 जगह मिल सकते हैं साहब. गेट दिस थिंग क्लियर कट कि अभी कोई भी डॉक्टर से आप 4 जगह मिल सकते हैं. नंबर 1 इमरजेंसी में, नंबर 2 ICU में, नंबर 3 ऑनलाइन कंसल्टेशन, नंबर 2 for this physical consultation. Now this is the 8th 100. If you have a diabetes or hypertension or any disease, see him 100 times to live for 100 years. जितना आप उसको ऑनलाइन और फिजिकल कंसल्टेशन में आप अवॉइड करोगे, उतना ज्यादा आप आईसीयू और इमरजेंसी के करीब आएंगे. गणेश जी के साथ किसी बंदे ने प्रार्थना करी, प्रेयर करी, तपस्या करी. तपस्या करवाता गणेश जी सामने आ गए. उन्होंने पूछा, साहब वत्स मांगो, क्या मांगते हो? पंडित जी ने साफ साफ बोला, गणेश जी आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है. कि नहीं बेटा मांगो, आपने मुझे प्रसन्न किया है, क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, जब भी मेरी मौत का समय आएगा मुझे बचाने आप आओगे, बस ये एक छोटी सी चीज़ है, आप मेरे को बचाने आइए. गणेश ने कहा तथास्तु, हो गया, ठीक है. पंडित जी के विलेज में बाढ़ आई, बाढ़ में वो पानी चढ़ने लगा. बगल वाला नेबर जो था वो अपनी बैलगाड़ी में बैठ गया. कहा पंडित जी आके मेरे बैलगाड़ी में बैठो, हम लोग निकल लेते हैं, बाढ़ का पानी बढ़ने वाला है. पंडित जी ने कहा मेरे को गणेश जी ने बोला वो मुझे बचाने के लिए आएंगे, आप चलो. वो चला गया साहब. पानी गले तक आ गया, डूबने लगे. तब तक बोट आई. बोट में जो हमारे लैंको हिल्स के लोग आए, कहे सर आ जाओ आप, हम आपको बचाने आए हैं. उसने कहा साहब मैं तो नहीं आता, मेरे को पता है कि सर मेरे को बचाने गणेश जी आएंगे. फिर पानी और बढ़ गया. ही गॉट ऑन टू द हट, ऊपर बैठ गए. तो बिल्कुल डूबने लगे, तब तक बिल्कुल हेलीकॉप्टर आया. सर मेरे रंडी, वी विल सेव यू, कम. नो गणेश जी ने बोला वो बचाने आएंगे. एंड ऑब्वियसली उसके बाद उनकी डेथ हो गई. स्वर्ग में पहुंचे. उन्होंने भले उदास मन से पूछा, गणेश जी मिले कि सर आप हमें बचाने नहीं आए प्रभु? तो बेटा मैं तो तेरे पास 3 बार आया था, मैं तो तेरे पास 3 बार आया था, तू ही मुझे नहीं पहचाना.
This is what happens before you get heart attack, paralysis, kidney failure. Heart attack kills suddenly, comes very slowly. 10-15 years it comes. But we miss it out. God, out of my experience, I have seen 99% of the deaths which I have seen, in my opinion, they are all suicides. Induku, God will give you enough and enough reasons to come. But we only tell that we don't want to go. How God gives you warning signs. Number one, your wife will tell you, Amma, you are putting on weight, you must go and see a doctor. Kuddika, you become dull. See, wife observes much more than, even बाज की नज़र भी उतनी पैनी नहीं होती जितनी बीवी की नज़र होती है. वो कहती सर अब आप डल हो गए, आपकी स्पीड थोड़ी धीमी हो गई है, आपको थोड़ा सा चक्कर आ रहा है. दैट्स अ फर्स्ट हिंट. सेकेंड हिंट, जहाँ पे आप रहते हो, जिस क्वालकॉम, इन्फोसिस, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, सडनली आपके एक फ्रेंड की सडन डेथ हो गई, तब ऊपर वाला कहता है, आपके दिल में भी आता है, सर मेरे फ्रेंड की, अरे कल तक तो मैं उससे बात कर रहा था, ही सडनली डाइड ऑफ हार्ट अटैक. दैट्स अ सेकंड वार्निंग साइन गॉड हैज गिवन यू. बेटा जा ईसीजी करा ले. थर्ड वार्निंग साइन ऊपर वाला क्या कहता है, बेटा आप कहीं नहीं जा सकते ना, ऐसा करता हूं मैं लैंको हिल्स के अंदर ही शुगर और बीपी का कैंप करा देता हूं, वहां पे जाके दिखा दो. उस समय भी सर हम बगल से गुजरते चले जाते हैं, वी डोंट सिट. फोर्थ इज आपका एचआर भेजता है, रिमाइंडर भेजता है आपका एचआर. देयर इज अ फ्री हेल्थ चेकअप अवेलेबल फॉर ऑल द परमानेंट एम्प्लॉई. You just have to go and meet so-called Mr. Nitin and just get the cardiac checkup done. And that also we neglect. 5वीं बार ऊपर वाला कहता बेटा अब तो तू आ ही जा. Say, I'll tell you few things, the few names which I can give you. I mean, say, we all were pained when we lost our favorite singer KK. 2.5 years apparently, this is in the news, he kept treatment for gastric. अरे साहब, गैस्ट्रिक डजंट किल, मतलब why do you have this nenu anukunna avasarama? Heart attack kills suddenly, comes very slowly. 10-20 years you neglect your heart, then only it comes. Same thing KK, same thing Mekapatti Gautam Reddy Garu, same thing Saurabh Shukla, same thing. How many names should I give you? Though I believe even Abul Kalam Sahab also, he suddenly dropped, but at that age of 95 and whatever, age was a very elderly age. But young people dying is only because of sheer carelessness. Sheer carelessness. With these few words, I would want to tell you one thing. Stay away from 9S, which I have told you. Stick to hundreds, whichever I have told you. Go to a doctor when you do not need him. My dear friends, listen to this. Go to a doctor when you do not need him, and you will never need him. The time you're delaying it, say if you give me a call at 2 a.m. and suddenly say, Dr. Ashish will help me out. Sahab, I work 24 hours, but somebody calling me out of the blue moon, no. 3-4 बार से आपको डॉक्टर को जो फैमिली फ्रेंड्स हम लोग पहले बनाते थे, वो कॉर्पोरेटाइज्ड वर्ल्ड ने किल कर दिया है. एंड वी आवरसेल्व्स आल्सो डोंट सी डॉक्टर एज अ फ्रेंड. फैमिली डॉक्टर इज द वन हु सेव्ड यू, हु विल स्टिल सेव मी, तो फैमिली डॉक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है. हम लोग हरियाणा, पंजाब, कहीं पे भी रहते थे, सबसे पहले इनवाइट करते थे कोई भी फंक्शन में, वो डॉक्टर चाचा को बुला लो भाई. वैद्य चाचा जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे. अब वो साइड में फिजल होते चले. क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर चाचा थे, जो अच्छे डॉक्टर थे, वो तब भी 100 चार्ज करते थे, अब भी 150 रुपये चार्ज करते हैं. लेकिन हमको क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज टोल्ड एक बहुत कॉस्टली डॉक्टर, जो जितना ज़्यादा चार्ज करेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है. So we are fizzling out our own. The best doctor is available next to you in 2LH, in 17LH, in Lanco only. Reach out to them before it is too late. My dear friends, especially somebody has asked, because with that I will stop it here, is कि सर आजकल बच्चों को बहुत डायबिटीज आ रहा है, obesity. Diabetes is not diabetes alone. The big killer is diabetes plus obesity. What is the problem with obesity? Obesity does not run in the family. The problem is nobody runs in the family. ठीक है? You would want to live a healthy life for 100 years, 100 minutes of exercise per day. आपकी heart rate 100 से कम होनी चाहिए. Whenever you have a pulse oximeter, please check it out. Pulse rate should be less than 100. Last but not the least is you must have a breathing exercise. COVID has told that we have a weak lungs.
100 seconds. Now I'll need some youngsters, that little angel who's sitting. She will check it out. Better stopwatch call. You have a stopwatch? Okay, open that one. Is समय I would want to test your capacity. Hold the breath. Hold it as much as you can. And try to hold it for 100 seconds. कुलदीप भाई कर लेंगे, he is a very good sprinter and all those things. तो वो करना है. जितना ज़्यादा आप lungs hold कर लोगे, उतना strong आपका lungs रहेगा and आपका respiration रहेगा. बच्चे, are you checking? Can we? Is everybody ready? अच्छा, जहाँ आपकी सांस टूटेगी, आप हाथ उठा लोगे. అర్థమైంది కదా? గట్టి గాలి తీసుకోండి. With 1, 2, 3 we will say, take a huge deep breath and then we will decide it. Okay? Are we all ready? सब लोग तैयार हैं? Yes? Yes, सुनाई नहीं दिया. Ready? Yes. Okay. So, बेटा, are you ready? जिसकी भी सांस टूटेगी वो हाथ उठा लेगा. ठीक है? 1, 2, 3 start. How much? Huh? 45 seconds and almost all of us are done. Ready साहब continue हो रहा है. DCP साहब तो बड़े बड़ों की सांस रुकवा देते हैं, अपनी सांस की क्या बात है. तो सर ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. जितनी लंबी आप सांस रोक सकते हैं, आपका लंग्स फिट रहेगा. Diabetes and obesity, these are the big killers for our future generation. फ्यूचर जनरेशन के लिए ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आपका वेट कितना होना चाहिए? वेरी सिंपल. आप ये थोड़े स्किन उठाएंगे साहब? कैन एवरीबडी ऑफ यू ये स्किन उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े दुबले लोग बैठे हैं, वो लोग सोचेंगे कि हमको वेट कम करने की जरूरत नहीं है. फॉर ऑल द यंगस्टर्स, हाँ, स्किन इतना ही वेट, इतना ही फैट आपके वेस्ट में होना चाहिए. इतना आपके वेस्ट में होना चाहिए. Your weight should be height in centimeters minus 100. Height in centimeters minus 100. Usually ladies 5 होते हैं, तो less than 60 kgs is the ideal weight for women, Indian women. Gents is 5'10", so around less than 65 to 75 is for gents. इन फाइनली चीज के लिए आप में से कितने लोग समझते हैं कि आप लोग ओबीज हैं या फैट है? How many of you believe that you are obese and fat? Come on. अभी दिखा दिया ना. जिस किसी में इतनी पकड़ नहीं, ठीक है. ऐसा काम करते साहब. 5 minutes of exercise and we will lose 5 to 10 kgs weight in 1 month. Are we ready for it? 5 minutes of exercise करेंगे and उसके बाद पूरा 5 से 10 किलो वजन लूज हो जाएगा. ठीक है? उस एक्सरसाइज करने के लिए पहले we all will look straight. We all will look straight. Please सीधे बैठ जाइए प्लीज. 5 मिनट की एक्सरसाइज है, 10 किलो वजन लूज हो जाएगा. ओके, नाउ प्लीज टर्न योर हेड एक्जैक्टली टू द राइट. प्लीज एक्सट्रीमली राइट. हाँ, एक्सट्रीमली टू द लेफ्ट. completely and extremely to the right. Now do this when somebody gives you food to eat. With these words, I would be very happy to take any question from any one of you. Anything, please ask me. Please don't ask me the controversial questions like COVID vaccination, stuff like this. We will talk offhands, not here. Anything, ma'am. कुछ introduction को लगा वाली. So आपका नाम and अच्छा इनको ढूंढ दिया. Good. एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन जरूर पूछिए साहब, क्योंकि इतना ज्यादा इंफोडेमिक है कि राइट इंफॉर्मेशन आजकल छुप गई है. तो क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. आपके क्वेश्चन से किसी और की जिंदगी बचेगी. इट्स इंपॉर्टेंट. प्लीज लास्ट 100 which I forgot to say is, you don't want heart attack for 100 years. You don't want heart attack for 100 years. The answer is 100 ECGs. When in doubt, get an ECG done. Whenever doctor is telling, please get it done. Ma'am, me introduction का हवाले फिर आप. I am Shashikala from 6LH. Ma'am. Since 33 years I am diabetic. Okay.
Because I lost my 15 years boy who suffered from muscular dystrophy, and he passed away with glomus tumor. So with that stress in that age, I was not aware that it's live in present moment. That I forgot, and I became diabetic. He's my husband. Same day we came to know that we both are diabetic. So we are maximum we are doing good diet only, but I am vegetarian. So some people are telling because I am vegetarian and that much animal protein I am not getting. So go for some protein drink. Is it essential? No, no, no. I am Okay, a very good question. मैं बिल्कुल brief में कह दूंगा. Animal protein and vegetarian, no, vegetarians can live very very healthy. उसमें कोई दो राय नहीं है. There is no need to push non-vegetarian. Number one. Number two is drink. I would tell you to avoid it in the sense कि usually हमारी जो drinks हैं वो sugary drinks हैं. ठीक है. फ्रूट जूस मैं हर किसी को ना बोलता हूँ अनलेस एंटिल आपको कोविड हुआ है, आप बीमार हो, डेंगू का सीजन चल रहा है, डेंगू के सीजन में मैं बोलूंगा टेक फ्रूट ड्रिंक्स, अदरवाइज नो. फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट ड्रिंक्स नहीं लेना है. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आई एम वेरी श्योर आई विल नॉट गेट ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जो सबसे रीजन है व्हाई एवरीबॉडी इज गेटिंग लॉट ऑफ डायबिटीज एंड ओबेसिटी, thumbs up, Pepsi and all those drinks only. Beverages जो commercialization of diet हुआ है साहब, जो जोमेटो और स्विगी आया है, तो उस कारण से डायबिटीज ज़्यादा बढ़ी है एंड सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज ज़्यादा बढ़ी हैं. नहीं, आपको पानी सबसे अच्छा ड्रिंक अगर जो है तो साहब वो पानी है, नो डाउट अबाउट इट. तो आप यू डू नॉट रिक्वायर द एनर्जी ड्रिंक. एनर्जी ड्रिंक इज नीडेड अगर आप रनिंग पे जा रहे हो एंड द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, आपके लिए नहीं. आई वुडंट सजेस्ट यू दैट वन. यस सर, भारती सर इज विद अस. अरे बेटा तू आजा, बच्चे यंगस्टर्स लेके घूम, माइक ले, हाँ, and फोटो खींचते चले जा. सर, see, I am also a diabetic for the last 20 years plus. Sir, You said that we should not try to drink fruit juices. Yes. But take fruits. Yes. Are there any foods which are no for a diabetic person? A very good question. डायबिटिक पेशेंट के लिए कुछ भी 100% नो नहीं है. देखिए नो क्या होता है, लोग मिस इंटरप्रेट बहुत आसानी से करते हैं. A slice of mango you can take it if your sugars are controlled. If your sugars are not controlled, then you cannot take it. Strict format में नो है तो obviously banana, सपोटा and dates and mango होता है, लेकिन one slice one date ले सकते हैं. प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर हम एक के बाद रुकते नहीं हैं, एंड उसके साथ कुछ और ड्रिंक चल रही तो बिल्कुल भी नहीं रुकते. तो that's the reason we have to understand. कोई भी strictly नो नहीं है डायबिटीज के लिए. And how about vegetables? Vegetables, all kind of vegetables are good. Rather अगर कुछ बहुत से लोग आयुर्वेदिक बैठे हुए हैं, and for ladies to know, आंवला is very good. आंवला is gooseberry is very good, one per day. आंवला is good. आपका green tea is very good which reduces weight. Lemon tea is very good which helps you in reducing weight. Honey water is very good. But again, now honey का मतलब सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच ले रहे तो वो भी आपका शुगर बढ़ा देगा. अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप. Best control of diabetes is diet. DIET. Diet is the best way to control diabetes. D is diet, I is insulin, E is exercise, T is tablets. This all four has to be 25% each. See, people like to say, sir, I don't want insulin, I don't want insulin. Sir, it's like you saying, sir, I don't want my wife to shout at me. कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है. तो एक टाइम के बाद इंसुलिन आपको शुरू होनी है. जितना ज़्यादा आप इंसुलिन से दूर भागेंगे उतना ज़्यादा आप आईसीयू के करीब आएंगे. फॉर डायबिटिक पेशेंट्स DIET, डाइट, इंसुलिन, एक्सरसाइज एंड टैबलेट्स. बहुत से हमारे तो जितनी एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग इंडिया में अपने ऊपर करते हैं उतना कोई भी कहीं पे भी अपनी बॉडी पे नहीं करता. हर लोग क्या करते हैं, सर मैंने 5 दिन से टैबलेट नहीं खाई, मेरा तो शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है. बहुत से सर मेरे केमिस्ट ने बोला, ये डॉक्टर्स बड़े कमर्शियल डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी दवाई लिखते हैं. सर एक 8th पास 10th फेल्ड केमिस्ट विल ट्राई टू टेल यू कि आप उसकी बात कंटेक्ट कर रहे हो एक DM. सर आप जितना ये सब एक्सपेरिमेंट करते हो हमारा आईसीयू बहुत अच्छा फुल रहता है. देखिए सर मैंने दवाई नहीं खा करके देखा, उसमें क्या होता है, वो होता है कि आप साइकिल में चल रहे हो, हाथ छोड़ करके चला रहे हो कि सर ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा. आप 10 मीटर चलोगे, 20 मीटर चलोगे, 30 मिनट के बाद आपका एक्सीडेंट होगा.
वो BMW है ना साहब, वो सहारनपुर में हुई थी डेथ अभी, ठीक है साहब, 230 240 ये हर रोज हैदराबाद का बंदा करता है अपनी हेल्थ के ऊपर। 300 क्रॉस कर, 300 क्रॉस कर, 300 कर। सर मेरी तो हर समय शुगर 350 रहती, कुछ भी नहीं होता साहब, क्या करना। बहुत से लोग, सर करना कुछ नहीं है, आप 10-20 लाख का 50 लाख का इंश्योरेंस रेडी करना, एंड आपकी वाइफ जो मतलब आप जिसकी बात नहीं सुन रहे हो उसके लिए 1 करोड़ का आपको लाइफ इंश्योरेंस करना, वो तो खुश हो, ठीक है साहब। तो वो नहीं, इट्स नॉट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट DIET, लिसन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लिसन टू योर डॉक्टर, फाइनलाइज अ डॉक्टर जिस पे आपको भरोसा है। भरोसा नहीं है, प्लीज डू नॉट गो टू दैट डॉक्टर। It's when I give this examples of wife and life and all those things, मैं लाफ्टर के लिए करता हूँ, मैं रीजन के लिए भी करता हूँ। आप शादी से पहले 10 लेडीज जो भी करते चूज करते हैं, फाइनली आप एक चूज कर लेते हो ना, फिर यू डू नॉट डाउट दैट लेडी whosoever you marry, the life partner. Same thing is with doctor. आप 10-20 चूज करके यू फाइनलाइज वन डॉक्टर, कंटिन्यू गोइंग टू हिम, ही विल कीप गिविंग यू राइट एडवाइस। बट द ओनली थिंग इज आप उसको सिखाने की कोशिश मत करिए। डॉक्टर्स आर हॉरेबल ओरेटर्स, प्लीज राइट इट डाउन। डॉक्टर्स आर हॉरेबल ओरेटर्स, वो बोल देंगे जो आप सुनना चाह रहे हो, वो नहीं बोलेंगे जो सच है। बिकॉज सर उनके लिए क्या, उनका वी आर वेस्टिंग टू मच ऑफ हिज टाइम, ही से नेक्स्ट पेशेंट वेटिंग फॉर मी। सर मैं वो राइस खा लूँ, फिर मैंने कहा हाँ राइस आप नहीं खाएंगे सर, बट 1 कप राइस तो चलेगा, हाँ चलेगा 1 कप ले लीजिए राइस। सर कुक्ड राइस लूँ कि अनकुक्ड राइस लूँ? अरे साहब छोड़ दीजिए, आप इतना आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर यू विल हैव टू गो टू अ डाइटिशियन। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग, आस्क टू द पॉइंट, नो डाउट कि यू शुड आस्क ऑल योर डाउट्स, लिख करके रेडी रख के ले आइए, एंड देन यू आस्क दोस डॉक्टर्स। आई होप दैट मेक्स द सेंस। Can I continue a little further? Please. You mentioned the word diet. Yes. Diet. Yeah. Then insulin. Yes. Then exercise. Diet, insulin, exercise and tablets. Mic पे बोलिए सर। Now, the second question was, we have got the impression that insulin is a last resort. As long as you can control your diabetes with tablets or exercise or diet, avoid taking insulin. Is this a correct concept? No, wrong. Thanks for asking that question. Can we have a big round of applause for Bharti's uncle? You know, it's nice to get the right kind of question. No. Okay, insulin is not the right last resort. We make it last because patient wants it only in the last. Patient wants it in the last. Insulin requirement, type 1 diabetes है सब, 5 साल की बच्ची उसको मैं insulin दे रहा हूँ. She requires insulin right from the beginning. Insulin is like a very simple, you have a problem with your body, with your insulin production, इसीलिए आपको लिखी जाती है. The time doctor suggests, take it. Any infection time you only require insulin. Any operation time you only require insulin. Insulin is very good to support your medicines. 1-2 tablet, third should be insulin immediately as per doctor's advice. हम लोग खींच रहे हैं सर, अभी मैं नहीं लूंगा, आपकी बॉडी के अंदर डैमेज होता चला जाएगा। इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में डायबिटिक में टैबलेट्स अच्छी काम करती हैं, लेकिन आफ्टर 5 to 10 to 20 years, एंड दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट बिकम्स कि सर आपने गन्ने का पूरा जूस निकाल लिया है, अब आप टैबलेट ज़्यादा दोगे तो उसका साइड इफेक्ट ही होगा, काम नहीं करेगी। Can I continue a little further? Last question. Please. If I'm taking metformin Yeah. for the last about 12 years, Yes. only the quantity has increased. Hmm. Suppose I'm taking 3000 mg every day, 1000 before breakfast, 1000 before lunch, and 1000 before dinner. Yeah. Is it okay or I should change? Good question. Let your doctor decide that. Okay. What happens is lot of people ask me, sir, will this tablet have a side effect? Aim ledu kada. That's a very dirty question you're asking, sir. It's like, every medicine will have a side effect, especially once you have checked it on Google. If you have not checked it, lot of people, this gentleman has come to me, taken the metformin for 1.5 months. I take metformin, I don't have diabetes. Metformin is one of the best tablets to be taken. Good for the pre-diabetics like me who have a fat and other things. So this patient, young boy, 32 IT fellow, he says, sir, 1.5 months से मैं metformin ले रहा हूँ, मतलब कोई साइड इफेक्ट, मेरे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है सर, कुछ होगा क्या? मैंने कहा जब तक चेक नहीं करोगे गूगल पे तब तक नहीं होगा। एंड दिस इज ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि जब आप पढ़ लोगे
कि इसको होने के बाद आपको चक्कर आता है, घबराहट होती है, वो सब शुरू हो जाएंगे. So there is a lot of this psyche involved, and Google hits you in that side only. Google always wants to show you how to prove you are smarter than the doctor. Let me make few statements which may be crude but they are important. Listen to this. The smartness of a smart patient, the smartness of a smart patient to fool a smart doctor gives fatal results. हमारा आईसीयू इसीलिए बहुत ज्यादा भरा हुआ है. स्मार्टनेस ऑफ अ स्मार्ट पेशेंट टू फूल अ स्मार्ट डॉक्टर गिव्स अ फेटल रिजल्ट. आप बताते हो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, यू वुड वांट टू कोट विश्वरूप राय चौधरी, यू वुड वांट टू कोट एनीबडी एल्स. सर मैं ये टैबलेट भी ट्राई करता हूँ, मैं ये आयुर्वेदा भी लेता हूँ, रात को नेचुरोपैथी भी करता हूँ. दैट्स ऑल आर ग्रेट बट यू आर फूलिंग योरसेल्फ. सिर्फ 3 लोगों को, आप सब तो मेरे से बहुत बड़े हुए हैं, आप बॉस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते. बॉस को पता है कब आप बीमार हो, बॉस को पता है कब आप थाईलैंड में घूम रहे हो, बता रहे हो कि सर मैं जॉब में हूँ. बीवी को पता है आप क्या कर रहे हो, करेक्ट और नो. आप बॉस को, बीवी को और वैद्य को बेवकूफ नहीं बना सकते. कुछ भी कर लीजिए साहब. आई होप दैट वाज ऑन द लाइटर नोट बट दैट्स हाउ द ट्रूथ इज. सो ये है सर. So Dr. Sab, good morning and thank you so much for your lucid talk on diabetes. And second thing, sir, I think I want to make use of this particular platform. I would like you to touch upon what is the basic difference between disease and disorder. Okay. And another thing, sir, a lot of pathis are available now. People are put into a lot of confusion. And which pathy we should follow? That is allopathy, allopathy, होम्योपैथी. सर आपका योर गुड नेम प्लीज. Yeah, my name is Chalam, sir. चलम साहब ने बहुत अच्छा जवाब क्वेश्चन पूछा है. कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चलम साहब? कम ऑन. एवरीबॉडी हैज अ डाउट and I would want your input into it. आपको बात करनी है सर. Another third point is now lot of diet regimens have come in, sir. Yes. Somebody will say it is always better to go for keto diet. Somebody will say that you always go for low index diet, low glycemic index diet. Somebody says you go for millet diet. I think people are put into a lot of confusion. I'll explain everything. Yeah. We'll start सबसे बड़ी with pati. When the word pati is connected to it, बहुत अच्छा जवाब मेरे पास है and I would want to connect with you. I would want you to get back to me also, so that आपको समझ में आना चाहिए साहब. एक सच बताइएगा. For the women it's different, for men it's. For men, who is more important and who is more trusty and who is great? The wife or the girlfriend? Okay. Thanks for that answer. That means your wife is sitting next to you. Yes. देखिए साहब, एंड इसको समझिए, आप इस चीज को बहुत सीरियसली समझिए, क्योंकि आपको बहुत से योद्धा मिल जाएंगे. कोरोनिल खा लो, बहुत अच्छा हो जाता है. बहुत से लोग मिल जाएंगे. मैंने 10 साल से खाया, कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है, सुन लीजिए इस चीज के लिए. आई एम नॉट हियर टू कमेंट अबाउट एनी अदर ऑल्टरनेटिव साइंस विच आई डू नॉट नो, बट आई विल ओनली कमेंट अबाउट वन थिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गर्लफ्रेंड एंड वाइफ? Girlfriend is always with you in your good times. She is not there with you in your bad times. Am I right or wrong? Yes. Okay? And average. Okay? And girlfriends can be many. Okay? Wife is always one. रात 3 बजे आपको प्रॉब्लम आएगी, किसी से भी प्रॉब्लम आएगी, तो फाइनली यू विल से योर वाइफ फॉर द हेल्प. दैट्स द सेम थिंग एलोपैथी इज ऑल अबाउट. हम आपके साथ दोपहर 2 बजे हैं, रात को 2 बजे हैं. अगर आयुर्वेदा या जो भी हो, आई एम नॉट हियर टू फाइट विद देम. वो कहेगा सर रात को 2 बजे भी मैं भी आपको देखूंगा, आपको उसके ऊपर भरोसा है, उसके पास जाइए, मस्ट गो. होम्योपैथ एंड ऑल. सर जब तक खुश है आप ये दवाई खाते रहिए, अगर हार्ट अटैक आएगा तो आप डॉक्टर आशीष के पास चले जाना. देयर इज वेयर इज वाइफ एंड गर्लफ्रेंड इज ऑल अबाउट. You have to have a faith, one who will stay with you. There are sometimes experimentation. Cancer, last stage, you would want to try something else. मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा. I will tell you how मैं try कर लो. Definitely try करना चाहिए. Obviously वो बात अलग है. That is about the second marriage and 100 other things. But at the end of it, it's about finding a life partner. It's about something which you can stick with. क्या आपको आयुर्वेदा, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ आईसीयू देता है जब इमरजेंसी आएगी? बस, I think that's where I answer it well. We are there for you. आपको for some reason, I lost my father-in-law in care hospital. ठीक है, बंजारा 72 heart attack. So now I would want to go to any hospital. I wouldn't want to go there.
तो कम टू अपोलो, कम टू एनी अदर हॉस्पिटल. आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो मैं आपको बताऊंगा हु इज अदर बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट यू शुड गो टू. समबडी एल्स टोल्ड मी, सर डॉक्टर 302 में डॉक्टर संतोष इज देयर, प्लीज गो टू हिम. व्हाट डू द पीपल डू इट कि सर डॉक्टर आशीष बड़े कमर्शियल डॉक्टर हैं, वो मानेंगे नहीं. फिर वो अपने फ्रेंड्स की बात मानेंगे. मुझे तो छोड़ दिया, मैं खुद भी अपनी नेनु अनुकुन्ना. That is where problem. Sir. Stay scientific and ask those questions, sir. Sir, why it is always said that it is evidence based and something is called traditional medicine? Great, great. So evidence based is we have enough medicines. Say बहुत अच्छा क्वेश्चन चलन साहब पूछ रहे हैं. I'm so happy to answer that. सर जिसमें एविडेंस नहीं होगा उसी में तो कहेंगे सर इसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है. सर साइड इफेक्ट उसी का नहीं होता जिसमें उन्होंने स्टडीज नहीं की हुई है. से एलोपैथिक की आप कोई भी टैबलेट उठा लीजिए, आप डाल दीजिए, सर साइड इफेक्ट वो आपको लिखे हुए गूगल में आ जाएंगे. किसी और में नहीं मिलेगा. सर होम्योपैथ, नो ऑफेंस टू देम प्लीज, नो ऑफेंस टू देम. इन माय ओपिनियन आई कैन नॉट चेक वो व्हाइट गोलियां हैं, मैं उसे खाऊंगा क्या होगा मुझे नहीं पता. यू मस्ट नॉट बी कॉम्पिटिटिव, यू नीड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री. सो इवन योर नॉलेज शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर योर हेल्थ. इट शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू डॉक्टर्स एडवाइस. आप पूछिए, गूगल बहुत अच्छा है, जरूरी है. डॉक्टर से पूछिए सर मुझे गूगल में क्या चेक करना चाहिए, मैं बताऊंगा क्या चेक करना चाहिए. I have admitted 175 years old gentleman एनकेफेलोपैथी में है, बहुत डायबिटिक फुट है. गर्ल वर्क्स विद डॉटर वर्क्स विद IT कंपनी. शी सेज सर आई नो वेरी वेल, 4 हॉस्पिटल एडमिट नहीं करे, मैं आपके अंडर एडमिट कराऊंगा. मैंने कहा कर लीजिए. मैंने कहा मीनाक्षी आई विल गिव योर फादर अ ट्रीटमेंट विच आई विल गिव टू माई फादर. नंबर 1 MODS मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम चेक कर लो, मैं बताऊंगा क्या चेक करना है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मोर्टेलिटी 27% से 100% है. 27 पर 100% पेशेंट मैं ठीक कर रहा हूं, बट टेक माय वर्ड्स ही विल वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल बिकॉज आई ट्रीट लाइक माय ओन फादर. दैट क्लैरिटी है. तो गूगल इज गुड. आई हैव टोल्ड इन बिगिनिंग ऑल्सो, गूगल साइंस टेक्नोलॉजी मनी, एक्सीलेंट सर्वेंट, बैड मास्टर. Use them as servant, they will give you the right information. Another diet to understand, because I have a lot of people and you are the ones who will save somebody's life. DIET is the something जो कोई भी डॉक्टर एड्रेस नहीं करता है. वो क्या है DIET? डायबिटिक पेशेंट को, सारे डायबिटिक पेशेंट, D is for depressed, वो डिप्रेशन में होते हैं. इतनी दवाई खा ली है, शुगर का भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा. That depression needs treatment to be given, and that is where the role of life partner comes. That's the role of children come. Okay, every diabetic turns out to be depressed. I is insomnia, रात को नींद नहीं आती है क्योंकि काल चेतलो तिमिर, पैरों में जलन होती है. गुंडल दड़ा, आपको पैल्पिटेशंस होते हैं. सो यू डोंट गेट प्रॉपर स्लीप. व्हेन यू डोंट गेट प्रॉपर स्लीप आप हर किसी से झगड़ा करोगे. तो एनी गवर्निंग बॉडी मीटिंग, somebody is fighting a lot, check it out, his sugar must be uncontrolled. So D is depression, I is insomnia, E is erectile dysfunction, that is sexual problem. हमारे कल्चर में हम लोग इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, ना पेशेंट बोलने की हिम्मत कर पाता है, डॉक्टर ऑब्वियसली बात नहीं करना चाहता. एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. टू मैनी डिवोर्सेज ऑल्सो. इरेक्टाइल, विमेन विल हैव अ सेक्सुअल प्रॉब्लम, मेन ऑल्सो विल हैव अ सेक्सुअल प्रॉब्लम. हर किसी को होता है एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. टी इज टायर्डनेस, सबसे खतरनाक बीमारी है. सर छात कावट ले दू, నీరసం నాకు బాగా నీరసంగా ఉంటుంది. So this is DIET that needs to be addressed. And how it can be addressed? To make sure you live for 100 years, I need to talk to you 100 times. हर बार मैं आपको 1% ज्ञान दे सकता हूँ, 100% ज्ञान एक बार में नहीं दे सकता. So you have to go to the same doctor again and again. Anytime doctor is asking for investigation, for heaven's sake, do it. Feel free to ask कि सर यहाँ पे कॉस्टली है, मैं इधर करवा लूँ. Keep changing the lab, no doubt about it. 4 eyes will save you. 4 eyes. Number 1 insulin. जब भी डॉक्टर बता दे स्टार्ट कर लीजिए, खुश रहेंगे आप. Number 2 is insurance. Every diabetic or everybody definitely should have an insurance. Rather, everybody should have 2 insurance. One is from the nationalized company and one is from the private company. Number 2 is इंश्योरेंस तब भी करिए अगर आपके पास CGHS ECHS है. इट्स वेरी वेरी टफ. ओल्डीज को ये बताना बहुत कठिन हो जाता साहब. सर मेरे पास तो मैं बहुत डायरेक्टर बन के काम किया हूँ, मेरे पास CGHS है. साहब 98% हॉस्पिटल डू नॉट टेक दीज थिंग्स एंड आई एम टॉकिंग विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, नो ऑफेंस. They will not take it because it has got their own tie-ups and all those things. So if you have CGHS, ECHS, EHS, everything else, एक प्राइवेट इंश्योरेंस रखिए. किस कंपनी का? जिस कंपनी का भी आपको कंफर्टेबल हो. तो एक बहुत ज़रूरी है.
स्पेशली एक अगर आपका ग्रुप इंश्योरेंस है तो होना ही होना है. रादर आई वुड वांट रेड्डी साहब कि वी शुड, यू कैन हैव अ ग्रुप इंश्योरेंस विच ग्रुप इंश्योरेंस सुपीरियर देन द इंडिविजुअल इंश्योरेंस. क्यों? क्योंकि उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर हो जाती हैं. अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी आज लेता हूँ इंडिविजुअल, मेरी डायबिटिक कंट्रोल नहीं कवर नहीं होगी 4 साल तक के लिए. लेकिन अगर रेड्डी साहब कहेंगे कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबका हम ग्रुप इंश्योरेंस कर दे, मेरी इंडिविजुअल पॉलिसी 15,000 की आएगी, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस सिर्फ 6,000 रुपए का आएगा. तो आई एम सेविंग 9,000 रुपीज. नंबर 1. नंबर 2 इज मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर हो जाएगी. तो गो फॉर ग्रुप इंश्योरेंस. हर एक बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, मेक श्योर योर पेरेंट्स आर अ पार्ट ऑफ, इफ यू आर वर्किंग इन कॉग्निजेंट, इन क्वालकॉम और वेर एवर यू आर, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने इन लॉज का नाम ग्रुप इंश्योरेंस में जरूर डालिए. 2012 I was working in Olive Hospital. 6 months I was there. When I say examples, I have no connection with any feelings. Disclaimer ना साहब कि ये entertainment में, this is the fact, this is the honest thing. Young boy 37 years old gentleman comes कि सर मेरे पापा को पैरालिसिस आया. A Muslim gentleman, टोली चौकी में रहता होगा. हमने एडमिट किया. I admitted him. Within 2 days he exhausted the whole amount because फाइनेंस था. 1.5 लाख का बिल हुआ. पैरालिसिस है, वेंटिलेटर पे है. तो मैंने कहा क्या बात हुई है? आई डोंट रिमेंबर विच IT कंपनी ही वाज वर्किंग. नाउ लिसन टू दिस, व्हाट मिस्टेक ही डिड इट और हिज फादर डिड इट. सर 7 साल तक मैं अपने फादर को अपने ग्रुप इंश्योरेंस में अटैच कर रहा था. उसके लिए मुझको साल में 1,000 रुपये देना पड़ता था. इस साल 2 महीने पहले मैंने कहा क्या जरूरत है, 7 साल तो यूज नहीं किया. इस साल मैंने वो 1,000 रुपये बचा लिए साहब. उस 1,000 रुपये में वो बंदा मेरे सामने रो करके, उसने वेंटिलेटर हटवा करके वो फादर की डेड बॉडी को लेके गया. आप यू डो नॉट रिक्वायर. हम लोग बार्गेन करते 500 रुपये डॉक्टर आशीष की फीस के लिए. 500 रुपये फीस के लिए साहब हम लोग बार्गेन कर रहे हैं, और 5 लाख के खर्चे के लिए वी आर वेरी हैप्पी. आपको पता ही नहीं लगता. द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, वेरी प्राउड. मेरे दोनों बच्चे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट डिसीजन. I'm happy for that decision. Me and my wife both are from CMC Vellore. Both of us are doctor. I am very happy. In next birth also I want to do MBBS from CMC Vellore, MD Medicine from CMC Ludhiana, and work in the city of Nizams. Even in my next birth, though my children wouldn't join. Why? Because सब जो इज्जत डॉक्टर की होनी चाहिए. my mother-in-law had a stenting done in US for 50 lakh rupees. वो वही चीज हैदराबाद में किसी भी गुड हॉस्पिटल में 5 लाख में होती है, which is very less amount. बट सर हम लोग जाके बार्गेन करते हैं. वी आर रेडी फॉर 100 other things. We are ready to spend 10, 12, 15 lakhs. But when it comes to our health, we want to bargain. साहब नहीं चलता. You have the best doctor in the world. You have the cheapest doctor in the world. When I say cheapest, with respect to the fees. A fees of MD medicine or DM medicine is $500 to $800. यहाँ पे साहब 500-600 रुपए में एक फोन कॉल पे अवेलेबल है. नंबर 1. नंबर 2, you have the cheapest branded medicine in the world. Cheapest branded medicine in the world. Pakistan and Bangladesh and Sri Lanka has a costlier medicine. उसके बाद भी साहब हम लोग सत्यमेव जयते कोट करके कहते सर जेनरिक मेडिसिन लेना चाहेंगे. नो ऑफेंस टू दैट, बट मैं अपने फैमिली को जेनरिक मेडिसिन नहीं दूंगा. नो डिस्कशन ऑन दैट. आई डू नॉट वांट टू. पुअर पेशेंट्स के लिए डिफरेंस होता है. तो दिस आर द थिंग्स. Please stay healthy, happy, and smiling. Any other question? I'll be very happy. Sir, I would like to say one particular point with regard to. I'll just stop it, sir. Just take, because मैं खत्म कर रहा था. एक इंसुलिन बोला मैंने, एक इंश्योरेंस बोला, एक इंफॉर्मेशन बोली. 3 I's. Correct information is very much needed. Please get the information. Final is immunization. And 5th I is involvement. फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. इंसुलिन, इंश्योरेंस, इम्यूनाइजेशन, इन्वॉल्वमेंट एंड इंश्योरेंस. दिस आर द थिंग्स. सर आप प्लीज. Sir, with a very high regard on medical profession, I would like to draw one particular analogy. For being a law-abiding citizen, I need not have to study law. And to maintain my own domestic or my business accounts, I need not have to qualify as a chartered accountant. Whereas to keep myself mentally, physically fit, certainly I need a medical, properly advised doctor's prescription. And the same prescription can't be replicated. Same prescription can't be cut, copy or paste to even my brother. That is a huge difference between other professions and medical professions. Thank you, sir. Sir, thanks a lot for those wonderful words. Can we have a big round of applause for Chalan Saab? That was a very good input. Sir. Thank you, sir. Thank you.
Any other question from anybody? Yeah, Sir, good morning. please. My name is Bhaskar. Sir, Can diabetes be reversed, sir? भास्कर साहब आप मतलब एक अच्छी तालियां तो बनती है साहब ने, बिजली फेंकने वाले हैं कि यॉर्कर डालते हैं. Answer is yes, answer is no. I do not know who was the gentleman who has left or resigned from IAS. I think he is a South Indian who was speaking from some Krishnan, who said, sir, इस देश में करप्शन खत्म होना चाहिए, yes हाँ या ना. हर कोई बोलता हाँ. इस देश में से वो I am very much sure you would have heard of that video, no? सब कि sorry, Sridhar. So he asked a very good question. ये क्या काला धन आना चाहिए, हाँ या ना? तो आप वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, और वही खतरनाक आंसर है. हर एक चीज का जवाब हाँ या ना नहीं होता है. मेडिसिन भी 10% ही हाँ या ना में होती है. वाइट मेडिसिन, वाइट मनी एंड ब्लैक मनी. लाइफ हम लोग साहब 80% इन बिटवीन में जीते हैं. दैट्स अ वे टू गो अबाउट इट. रिवर्सल ऑफ डायबिटीज पार्शियली पॉसिबल, पार्शियली नॉट पॉसिबल. वो साहब एक धोखा है, एक वो उसको क्या कहते हैं, मिथ्या है कि वी ऑल, हम लोगों में आदत क्या है, दो चीजें हैं विच विल कीप यू हैप्पी एंड हेल्दी. नंबर 1 इज मेडिकेशन, नंबर 2 इज मेडिटेशन. मेडिकेशन एंड मेडिटेशन. क्या मैं हाथ छोड़ करके बाइक में चल सकता हूँ, साइकिल में चल सकता हूँ? आंसर इज यस, बट रिस्क बढ़ जाता है. जिस भी लोगों ने रिवर्सल का ट्रायल किया है, यू विल नॉट नो दैट सडनली एट नाइट 3 o'clock बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, योर शुगर विल रीच अप टू 350 एंड 340. तो ये जो डायबिटिक रिवर्सल चीज है, आई पर्सनली, देखिए मेरा नॉर्मल HbA1c वी वांट इट लेस देन 6.5, दैट देन वी विल कॉल इट एज प्री डायबिटिक. माइन विल बी अराउंड 6. डायबिटिक वो जो दिवाली के समय वो 6.4 तक आ जाता है. उस समय मैं मेटफॉर्मिन की 2 टैबलेट खा करके आई रोम अराउंड. तो जो रिवर्सल है वो बहुत गलत सा शब्द है. ये द राइट वर्ड ये है, क्या मैं कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकता हूँ या नहीं? दैट इज द राइट क्वेश्चन. कॉम्प्लिकेशन आप अवॉइड कर सकते हो 7 A's के साथ. नंबर 1 थिंग इज, एक डॉक्टर को स्टिक करके रेगुलर ट्रीटमेंट लीजिए. सब डाउट उससे पूछिए, सब डाउट पूछिए, हर बार पूछिए. एंड ये मान के चलिए, विल ही राइट अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन? यस, ही विल राइट. सी, कोई भी मेरे पास, आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए, आप खुद आइए, आपकी एज 55 ईयर्स है. फॉर 45 ईयर्स मेरे को आपकी गाड़ी खींचनी है. 45 ईयर्स में मैं हर साल 5 से 10 हज़ार रुपये टेस्ट कराऊंगा, फिर खींच पाऊंगा. लोग कहते हैं कि सर कम से कम टेस्ट में. साहब मैं डॉक्टर हूं, जादूगर नहीं हूं. मैं अगर हाथ में नस में हाथ पकड़ के करा दूं, सर फिर आप वो तकिया कलाम डॉक्टर के पास ही जाइए. आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, और एक ही बार नहीं, वही टेस्ट मैं दोबारा भी कराऊंगा. आई हैव टोल्ड यू, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस, यस, देन ओनली यू नो इट. 2 इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल होंगे, 3rd एबनॉर्मल होगा. तो जब दोबारा बोल दिया, अरे साहब ये तो कमर्शियल डॉक्टर है, 30% इसका कट जाता होगा. आई विल, इफ यू हैव द डाउट, फेथ. व्हेन आई एडमिटेड मीनाक्षी's father, I told, beta, I can treat your father like my father. Number 1, he will walk out of this place only because of your faith and your prayers. Last is insurance policy. वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. सो साहब रिवर्सल पॉसिबल है. आपकी और मेरी पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, 20 किलो कम कर लीजिए, रिवर्सल हो जाएगा. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू. So one question if I have. सर, Correct me if I am wrong. This is regarding the sugar levels, which Sir. we believe take it as fasting 100 and post lunch 160. There are certain reports or even the news going around that this has been kept at level because of the vested interests of some lobbies, which in fact is slightly higher than that. And it has been kept so low so that really the people, those who don't have sugar, also believe that they have sugar and they go for medication. okay, Is it true? Good question. Absolutely not true at all. Stick to 100 and 140 to the point. That's it. Maintain your fasting. It does change with the age. So Nitin and mine should be less than 100. But with elderly people, we don't want to have that tight control. My HbA1c or any youngster's HbA1c should be 6 is better, 5 is better. For anybody who is elderly, for Bharti uncle, for anybody else, I would want it around 7, 7.5. So that keeps changing. Sir, it's a personalized, lot of people, matlab no offense to United States, lot of people, sir, I am taking multivitamin from US.
नहीं चलता साहब, आप इंडिया में हो, इंडिया की तरह ही रहो, इंडिया की रायलसीमा रुचुलू आप खाते हो, तो जो आपकी बॉडी के लिए है, यू हैव द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल। आपका डॉक्टर से आपको बिल्स में प्रॉब्लम आ रही है, टॉक टू योर डॉक्टर, ही विल टेल यू वेयर यू विल गेट अ मच बेटर रेट। थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो जाएगा, ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, ही विल हेल्प यू आउट इफ़ यू हैव मेड योर डॉक्टर योर फ्रेंड, बट एक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जो I'll give you example, Satmev Jayate they were discussing about Amaryl tablet, which is available for 163 tablets, 163. Then generic tablet is available 80% less. साहब 4-wheeler है ना साहब, get my words clear, 4-wheeler है। आप BMW के शोरूम में आकर के you're telling me to give you an option of 4-wheeler as a nano, सर nano भी तो 4-wheeler है ना, ठेला भी तो non 4-wheeler है ना, नहीं चलता। You all by the grace of God are from a blessed family. None of you follow in the BPL group, below poverty line group. Why do you want to take and ask for the substandard, something which is not suitable for you? Say when we buy, when we pay for premium reasons. What is I have worked 1.5 years in Khammam and then worked with Yashoda and Apollo. What is dichotomy? What is the problem I find it? People want US, UK laga treatment kawali, Hyderabad lo kawali, but we want to pay like Khammam prices. That's the biggest problem. You have the best people around, you have the best family around, go for the best, go for the premium. Why do you have to compromise? Do not try to outsmart your doctor. आप बॉस बीवी और डॉक्टर को आउटस्मार्ट नहीं कर सकते, आप नुकसान में रहेंगे. That's what happens. So people take the best prescription and then they ask chemist to decide. So chemist removes one tablet. So सर ने बहुत अच्छा सर आपने पूछा सर आपकी गुड नेम प्लीज. या सत्यनारायण सर ने सबसे खतरनाक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल सर ने दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सबसे खतरनाक है, अच्छी भी है टेक्नोलॉजी, क्योंकि वन ड्रग विच अगेन दे स्पीक नेगेटिव अबाउट इज स्टैटिन. बहुत डिस्कशन चलता है सर, मैं हर रोज लेने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी ड्रग है, वन ऑफ द वेरी लाइफ सेवर ड्रग्स. किसको क्या सूट होगा वो आपका डॉक्टर बता सकता है. आपने जितने भी मतलब केके इज अ लाइव एग्जांपल, ही नीडेड हाई डोज ऑफ स्टैटिन, ही डिडंट टेक इट, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमता रहता है. अब ये कौन घुमाता मुझे नहीं पता, क्योंकि जितना ज़्यादा आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा कॉर्पोरेट बेनिफिटेड होते हैं. 50 रुपए से 150 रुपए की टैबलेट्स में आप हेयर फेयर करते हो, 5 लाख का बिल आपका बनेगा ही बनेगा. से आर यू रीचिंग माई पॉइंट? यू डू नॉट नो कि भाई कि कौन उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है. दैट्स द थिंग. एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? यस सर. सो योर नेम प्लीज. Sanjay. Hi, Sanjay. Sanjay Singh. Thank you for the wonderful speech. It was really very, very informative and most entertaining also. Thank you. I have 2 questions. Sir. One is, what are like maybe 1 or 2 exercises that you feel that people should do actually to avoid or prevent diabetics? Means you said 100-minute exercise, but what could be some 1 or 2, 3 important? And the other one is, it is more like when we go to a gym and I want somebody to be a fit coach, so that I can also believe that guy. Or if I go to a boss, I want him to be more, better than me, so that he can. But it doesn't happen with doctors. I go to a gastric doctor and I see that the person is already obese. How can we solve this problem? Fantastic. Can we have a big round of applause for Dr. Sanjay? Okay, whether doctors are fit or not. Sarji, you have touched the point which I am not happy to address, but I will address. One of the most stupid and very dedicated people I have seen are the doctors. Most stupid. And I see with respect, obviously मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, इतने क्रेजी होते हैं सर, वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट मेडिसिन पढ़ पाते हैं. उनको बात करने का तरीका नहीं आता, उनको कॉमर्स नहीं आता, उनको अपनी बॉडी का ख्याल करना नहीं आता. That's why they live 10 years lesser than the average population. Average life expectancy is 68 years. Doctors live for 58 years. Number 1. You are very right, Sanjay साहब. आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा है, but I would answer that one. इसीलिए डॉक्टर पे मत डाउट करिए. इसीलिए मत डाउट करिए. केरला में the life expectancy is 77 years. केरला में भी doctors live 10 years lesser. They live for 67 years. सबसे stupid, सबसे dumb, but सबसे dedicated वही लोग होते हैं.
इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ साहब कि मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे। बहुत से नॉन डॉक्टर पीपल टेल मी सर मेरी बच्ची जा रही है डॉक्टर बनना चाहती है, मैं तो नो नो नो, आई विल हेल्प हर नॉट टू मेक द रॉन्ग डिसीजन इन लाइफ, आई विल टीच हर। सर आपको पता ही नहीं है कि एक डॉक्टर कितनी परिश्रम करता है, वो किस किस से लड़ता है। वो एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लड़ता है, वो अपने परिवार से लड़ता है। बीवी कहेगी वो 200 रुपए देगा और आपके पूरे 1 घंटा खा करके जाएगा, आप मत जाओ। अरे साहब ठीक है जान बचेगी, वो बात करता है। वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से लड़ता है, मैं हर रोज लड़ता हूं। मैं कहता हूं सर मैं ऐसी टॉक दूंगा मैं 100 लोगों को बचा लूंगा। सर जी जब तक हार्ट अटैक नहीं आएगा वो लोग नहीं सुनेंगे। एंड टेक माई वर्ड्स, दे आर 90% राइट। अब जितना न्यूमोकॉकल वैक्सीन, कोविड वैक्सीनेशन की बात है, कोविड वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं 20 साल से साहब वैक्सीनेशन दे रहा हूं, 20 साल से। मेरे पास कौन वैक्सीनेशन लेने आता है? द वंस हु आर गोइंग टू यूएस एंड यूके। इंडियंस को बताता हूँ वैक्सीन ले लो सर, अवसरमा नाकू एम ले दो कदा, वाई शुड आई टेक द वैक्सीन। कहते वो जयललिता जी को शी हैड अ लंग इन्फेक्शन and she died, and that lung infection can be prevented by 1500 or 2500 rupees worth of vaccine called as pneumococcal vaccine. मैंने अभी तक एडवाइस किया है 1 लाख लोगों को, लिया है कितने लोगों ने? 1000 लोगों ने ले लिया। मेरे खुद के डॉक्टर्स फ्रेंड बताते कैजुअल, जो बाकी लोग जब बिल 10 20 50 लाख का होता है तब समझ में आता है। उनको समझ में तब आता है जब बच्चे उनके बोलते हैं बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया प्लीज टेक डीटैप वैक्सीनेशन or please take flu shot. And everybody knows कि flu shot is compulsory in United States. You will not get your paycheck without getting the flu shot. वहाँ की बात मानेंगे, यहाँ पे आपको फ्री की एडवाइस है, कोई नहीं मानना चाहता। So you're very right, sir. Doctors are over dedicated, so that's why they don't take care of themselves also, which is wrong. And I like to keep telling them. इसीलिए साहब मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मेरा क्या है सर, हर को कहता है 10 hours 12 hours प्रैक्टिस और बैठिए साहब, ज्यादा पेशेंट आएंगे, यू विल सर्व मोर एंड यू विल अर्न मोर। मैं कहता सर ना मुझको अर्न करना आता है, मुझको सिर्फ जिंदगी जीना आता है। ये फ्री के डिस्कशन के बाद भी अगर रेड्डी सर की दुआ से मैं एक जान, एक जिंदगी, एक कम्युनिटी बचा लूँ साहब, मेरे सारे एफर्ट्स पूरे हो गए। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। यू आस्क्ड वन मोर क्वेश्चन, आई फॉरगॉट। दोनों ही हो गए? Okay. Exercise, sir. Okay, very, very good question. Which exercise is good? Whichever you can do it consistently. Whichever you can do it consistently. The 3 best exercises. 4th best exercise is walking. 10,000 steps per day is walking is the best. The 3rd best exercise is, dancing. The 3rd best exercise is dancing. The 2nd best exercise is what sir is doing. It is laughing without a reason. थोड़ा सा कस के हंसे साहब। Second best exercise is that. So this is how we have it. जो भी आप consistently कर सके वो जरूरी है। 100 minutes is the time frame which is needed. हाँ, स्पीड अलग अलग होनी चाहिए। कभी भी मैं रेगुलरली सटली कहते रहता हूँ कुलदीप साहब आपकी स्पीड अलग होगी, कमल साहब की अलग होगी। तो एज में डिफरेंस होता ही होता है। कंपैरिजन नहीं साहब, कॉम्प्लीमेंट्री बनना है, कॉम्पिटिटिव नहीं बनना है। हर किसी की, आपकी, मेरी जिंदगी में खुश रहना सीखे साहब। बिगेस्ट थिंग विच आई फाइंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया इज कि नॉर्थ इंडिया में दे विल लाफ विदाउट अ रीजन, कुछ भी आप बोल दीजिए वो हंसते रहेंगे साहब। साउथ इंडिया में आप जोक बोल दीजिए, जो खत्म भी हो गया कोई हंसता नहीं साहब, तुमको बताना पड़ता टिंग टोंग एंड एवरीबॉडी लाफ्स। तो जितने हंसते खिलखिलाते रहेंगे साहब, यू विल लिव द लॉन्गेस्ट। सो बेस्ट एक्सरसाइज आई सी रेड्डी साहब डूइंग इट वेल। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जब कभी मैं वॉकिंग में देखता हूँ हर समय सबके आगे ही रहते हैं साहब। तो यस, 100 minutes ऑफ वॉकिंग पर डे इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। लाफिंग क्लब खोलना चाहिए साहब। सर मैम। Sir, I wanted to know, if any one of my parents had sugar, so is it compulsory? You will get it 100%. As a child, I will get it. Yes. Then if it skips you, it will come to your child. Oh, okay. And how do now as a How do I prevent it? it? Yes. The 3 big killers of Andhra Telangana is chicken, mutton, and rice. And rice is the more deadlier than chicken and mutton. To the point. Sir, can I kuddi ka tinta, brown rice tinta, sab nonsense है साहब.
You will hear yes because they know यार इसको मैं जब तक हाँ नहीं बोल दूंगा ना, ये लेडी मुझे छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाएगी. So they all say yes. Say like I'll be very very crystal clear. No offense to anybody intended. Fasting, the best the fasting, the hardcore fasting which we do it in Ramzan is not at all good for diabetics. अभी मेरे बहुत खास मित्र है, नाम नहीं ले सकता उनका, लॉ मिनिस्टर है, वो कॉल आया दिल्ली से, सर मैं तो अभी निर्जला व्रत रखा हुआ. मैंने कहा सर आपको डायबिटिक है, उनकी शुगर अभी 223 आ गई, अभी तक कंट्रोल. मैंने कहा सर डायबिटिक कैन नॉट फास्ट. नो फास्टिंग, नो फीस्टिंग, नो फास्टिंग और नो फीस्टिंग एट ऑल. यू कैन नॉट फास्ट. बिफोर कमिंग डायबिटीज यू कैन फास्ट. फास्टिंग विल प्रिवेंट डायबिटीज, फास्टिंग विल प्रिवेंट डायबिटीज. लेकिन एक बार अगर डायबिटिक आ गया है तो फिर आप फास्टिंग नहीं कर सकते. 6 times of meals आपको खाना है, सुबह दोपहर शाम रात, तो दैट इज द टाइम. स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, दिन में 3 बार नहीं, दिन में 2 बार नहीं, दैट्स द थिंग. यस आपको आएगी जरूर, मेरे को आएगी जरूर, एंड वर्क ऑन इट. सो यू कैन प्रिवेंट इट, यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज. आई विल नॉट बिलीव इन द वर्ड रिवर्सल ऑफ डायबिटीज, आई विल बिलीव इन द वर्क ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज. Now I don't have, by God's grace. So how do I avoid it completely? Like रेड्डी साहब से झगड़ा करना बंद कर दीजिए. हंसते खिलखिलाते गाते रहिए मैम. हमारी लैंको जो कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी है. मैं तो काफ़ी जगह रह करके आया हूँ, मैं भी बताता हूँ, मेरा तो रिटायरमेंट होम रहेगा. जितने ज़्यादा भी आप हंसते खिलखिलाते रहेंगे, बल्कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या वैसे भी फेसबुक में देखते रहेंगे, छोटी छोटी वो गाड़ी से गाड़ी टच होगी, बंदा उतर करके झगड़ा करने लगता. छोड़िए साहब, आप क्यों इतना, गाड़ी टच हो गई है, आपके पास इंश्योरेंस है. मतलब विथ फुल रिस्पेक्ट, आई सी लॉट ऑफ. 4 दिन पहले मैं विजयवाड़ा होकर के आया था, गाड़ी ने थोड़ा रॉन्ग कट लिया, नो डाउट अबाउट इट. वो बंदा हॉन्ग करता गया 10 मिनट तक, फिर गाड़ी आगे रोकी, उतरा, वो ड्राइवर के ऊपर चिल्ला रहा है. दिस टाइम आई हैव यूज्ड द वर्ड अवसरमा. आपने कर क्या लिया? आप कुछ भी नहीं किया. इट्स लाइक अ डॉग बार्किंग इन द कार. आपने कार रोक दी, डॉग का आके सीट पे बैठे, कुछ नहीं करता, आपने अपना बीपी शुगर जरूर बढ़ा लिया. तो डॉक्टर से भी जब आप उस तरीके स्टूपिड क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपना बीपी शुगर बढ़ाओगे, डॉक्टर को कुछ भी नहीं होता मैम. तो दिस इज द वे इट इज. रिवर्सल नहीं, प्रिवेंशन कर सकते हैं. जितना भी ज़्यादा आप जोमेटो स्विगी हमारे पास भी है, हर किसी के पास. माओं के लिए बहुत ज़रूरी है अपने हाथों से खाना बनाइए. आई नो बच्चों को प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा अच्छा लगता है. एक माँ जब खाना बनाती है तो सिर्फ खाना नहीं बनाती साहब, उसमें अपना दिल, जान, प्यार, अपनी आस्था, पूरी चीज़ डालती. आज वो कम हो गया है, इसीलिए डायबिटिक्स बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं. माँ ने वो कर ले सर, इबैको से मंगा लेते. मतलब फुल रिस्पेक्ट एवरीबडी एल्स. साहब माँ है जो कि आपके और मेरे को बचाती है, और जिस दिन माँ चली जाती है, वी ऑल नो इट कि हाँ व्हाट वी हैव लॉस्ट इन आवर लाइफ. सो यस, अभी तक हमको मुझको परसों एक वीडियो ये आया था, मुझे वो अपनी सेल फोन के बगैर मेरी पुरानी वाली माँ चाहिए. तो लेडीज़ का रोल मैम बहुत ज़्यादा है. क्राइस्ट को भी जन्म लेने के लिए ही नेवर रिक्वायर्ड अ फादर, ही ऑलवेज रिक्वायर्ड द वूम ऑफ अ मदर. तो माँ की जो पोजीशन है, वो माँ को खुद भी नहीं पता होती कि हाउ इम्पोर्टेंट हर पोजीशन इज. सो दैट्स हाउ इट इज. एनी अदर क्वेश्चन? Question, sir. मैम माइक प्लीज. नहीं मैम प्लीज, Just I want to tell you. दोनों को दे दो भाई, वो तो दोनों ही बड़ी प्यारी माँ है. मैम प्लीज आप पूछिए ना, वो बहुत एक उनको भी दीजिए. Sugar-free tablets, how important or unimportant? वेरी ग्रेट. 2 or 3 per day is enough. अति का भला ना बरस ना, That अति means की you भली can ना. have it. You can have it. You can have it. See, it's like anything in excess is bad. अगर आप उसके ऊपर, सर मैं वो शुगर फ्री कलाकंद खा रहा हूँ, पूरा 1 kg आप कलाकंद खा गए, अरे मैम कम ऑन, नहीं काम आएगा. यू गेट माई पॉइंट. तो अगर कुछ भी चीज़ है, आप स्वीट डायबिटिक होके स्वीट खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? डेफिनेटली खाइए. जिस दिन भी आप एक स्वीट एक्स्ट्रा खा रहे हैं, एक स्टैटिन की टैबलेट एक्स्ट्रा खा लीजिए, मेटफॉर्मिन की टैबलेट एक्स्ट्रा खा लीजिए. तो आपको वो जो उसका चीटिंग जो है, वो आपको डॉक्टर सिखा देगा. लेकिन यह है कि आप उसकी सिर्फ रॉन्ग एडवाइस ही मत याद रखिए, उसकी अच्छी एडवाइजेस भी याद रखिए. तो चीटिंग इज़ वेरी मच नीडेड. कि आपका सर आज तो साहब वो 31 दिसंबर है. अब 31 दिसंबर हम लोग बिना मुर्गे की टांग के काम कहाँ चलेगा मैम? तो वो चीज़ है. बट यस, 31 दिसंबर को आने से पहले मैं एक स्टैटिन की टैबलेट ज़रूर खा के आऊँगा, मैं एक मेटफॉर्मिन की टैबलेट ज़रूर खा के आऊँगा. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, बिकॉज नो नो इट्स गेटिंग प्रोलॉन्ग, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग है.
Lot of people ask me, sir, मैं टैबलेट से बहुत डरता हूँ, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, 10 साल पहले डायबिटीज थी, अब मैंने रिवर्स कर ली है, अब सब कुछ कंट्रोल हो गया है. बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं आप, बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं. अगर आपको टैबलेट के बगैर जिंदा रहना है, हिमालय चले जाइए साहब. Himalayas is the only place where you get a pure water and your wife will not accompany you there. See, every day जो stresses है, every day जो खाना आप खा रहे हो, every day जो आप जो air आपको ले रहे हो, वो pure नहीं मिलती. जो सेब भी आप खा रहे हो, that is also not pure. ठीक है. तो जितनी जो हम लोग इस समय भौतिक जिंदगी जी रहे हैं, इसमें तो उसका वो टैबलेट्स की जरूरत है ही है. Above 40, you definitely require statin, you require metformin. A diabetic requires 7 A's. ARBs, anti-diabetic drug, atorvastatin, aspirin, antioxidants, antacids, and vitamin A. These are the 7 A's they require. इसी को होता क्या, डॉक्टर पूरी दवाई लिखता है, वो जाके केमिस्ट से उसको कम करवा लेते हैं. यही बार्गेन चलता रहता है, कम करा लेते हैं. सर 2,500, now I am only taking 500 rupees of tablet. जो 2,000 rupees की दवाई आपने बचाई है, वो 2 साल में आपको 48,000 rupees बचा देगी. और 2 साल के बाद आपको हार्ट अटैक पड़ेगा, तो उसके बाद आप 5 लाख रुपए जमा करोगे. Are you reaching my problem? People are, sir, డాక్టర్ సాబ్ మా కెమిస్ట్ మాకు బాగా క్లోజ్. ఆ చెప్పారు ఇది అక్కర్లేదు కదా, 3 months నేను ఏం తీసుకోలే, నాకు ఏం కావాలి. सर 3 महीने तो दवाई नहीं खाए, 3 महीने नहीं खाए, 3 साल के बाद नितिन है ही है, हम ही है आपकी सेवा के लिए, तब आप आओगे हार्ट अटैक लेकर के. सर मेडिसिन के साथ नहीं खेलना है. बार्गेन इट विद द डॉक्टर. ही विल टेल यू व्हाट टू टेक, व्हाट नॉट टू टेक. Any other question? Ma'am, one of the very vibrant ladies, somebody who really helped me in taking the right care of right person with right disease. So Asha ma'am. इस समय कमल सर की धड़कनें बढ़ चुकी हैं. Thank you for helping me that time, listening to me. Yes, I would rather say I didn't listen to you, you listened to me. Thanks for that. Ma'am, wife is the boss. I had to tell that. Yeah. I want to know, does a diabetic have to have statin? Yes, 100%. And what about triglycerides? That will be taken care of. By Diabetic has to have a statin. You can bargain it. It's like a biker has to have a helmet. Very simple answer. And about, like you said, okay, when you are eating, you're enjoying, feasting, so you have extra metformin. How often can you do that? Once in a week. Once in a week, yes. Once in a week, yes. Very simple है साहब. मैं कभी भी रसगुल्ला यहाँ पे कभी वो जब सैटरडेज को लगता है ना, तो मैं तो रास्ते में मेरे को सैंपल आते हैं, मैं जेब में डालते रहता हूँ. मैं मेटफॉर्मिन एंड स्टैटिन यूजुअली मेरी जेब में रहती है. जहाँ पे भी रास्ते में खाया उससे पहले एक टैबलेट. अच्छा, पहले लेनी चाहिए. मतलब वो पहले बाद में कर सकते हैं. इट्स इज वेरी सिंपल मैम, इजी वे टू टेल यू. आप यूजुअली हेलमेट नहीं पहनना चाह रहे हो, लेकिन सडनली आपका मन है कि मैं बाइक को 200 की स्पीड में चलाऊं. तो जरूर चलाओ, अब मन है तो. लाइफ थ्रिल्स बट किल्स, स्वीट थ्रिल्स बट किल्स. तो एटलीस्ट हेलमेट तो पहन लो. दैट्स हाउ इट इज. Thank you. A big round of applause for Asha ma'am. You know, the women power which we have it here. The ones who are not asking question, but yes, we are, was only and only because of the Stri Shakti. Yes. Any other questions? Sir, it's not question. Please. Just I want to share my experience. Please. Though I'm taking insulin since 30 years, all my friends know that I'm not having any regrets that I became diabetic. It happened. I'm enjoying, sir. That's what I'm. Don't get any fear about diabetes. If it comes, it will come. Allow it. That's all. Enjoy. It's not stopping me from anything. I want to tell you, they know very well about me. Fantastic. I think that's a very good testimony. 30 years she's on insulin. Yes. Very good. Yes, that's what I want. Ma'am, 30 years I am married and I'm still happy. Any other question, please? I think we'll conclude it here. But before I conclude it, I sincerely think, I really believe one of the very vibrant presidents and all these things could only happen because of our CS Reddy sir. Can we all stand up and give a big round of applause for Reddy sir? Come on guys, it's very important. Thank you Reddy sir, really appreciate it. Doctor also. Thank you. Please sit down, sir. Please sit down. Please sit down.
Sir, correct, sir. Please sit down. Please sit down. So it is not that I'm so much deserved for all these things, but it's my responsibility and duty, and of course I have so many ideas to do, so many things for this. But because of that only you elected us to be a president or to our management committee, sir. It is my minimum responsibility to say. And it is proved our initiation regarding this health and body maintenance. And first choice is our Ashish Bhai. And he really deserves, sir. And inaugural initiation is proved to be an excellent one. And many of them, none of them, even though it is a sunshine there and they have shifted to the other places, that shows that you are so, your speech is so much important and they are liked so much. And we thank you so much, sir. And really, because he's a very friendly doctor, which I have seen in Lanco Hills, wherever he also laughs very well and he sings very well. And beyond it, beyond it, he always be available for us. And of course, he is very busy man. And he always refers that CMC. CMC means this Christian Medical College, Raivelluru. This I know that because we were the auditors for those medical college those days. There are auditor. So it's one of the best, and it is equivalent to that AIMS, Yes. Delhi, that one of the best colleges. And he and our Sudhir is 2LH, is a neurologist. We have studied together. Really so much, sir, and you have enlightened us. And we really, it definitely will have to change our life. My wife will be very happy because she is always telling all these things. But unfortunately, I'm not listening to her. But now she may quote whatever you said. Probably I may follow henceforth. Yes. And thank you so much. And here and after, every week or alternative weeks, we'll have this type of talks, either in body maintenance or in mental maintenance. This I am going to propose every alternative weeks, one session like this. I think this is the good atmosphere I am really enjoying, and you must also be enjoying. And we will initiate that. Thank you so much. And we have 1 minute, Mr. Bhaskar, Secretary, I think you would have left to that. And our Secretary, of course, sir. Please, Secretary, please. Have a honor to him. Can I ask all of you to just come forward? We'll have a picture of all of us together. Please come forward. It's been a really enriching session, and only because of you. Can I have all of you on the background? There is my darling who will take a picture. Sir. आइए सर, अच्छा साहब आइए, आइए. There is my darling. Yes. आइए भाभी. आजा, फोटो लेने तेरे को. Absolutely, आगे आगे भाई फ्रेंड्स के पहले. Yes. Yes, sir. Have it, sir. Picture, please. 1 minute, sir. 1 minute. We'll have a picture. Yes. Can all of you come this side, please? It will be really nice to have all of you in the picture, please. Yes. आइए. So बैठेंगे सर आप और मैं बाकी लोग खड़े हो. Otherwise you can sit, sir. Take out chair. One request, we didn't talk about wealth management. Wealth management, anyhow, it is my subject, we will do that. Next session. Yeah, we will do it. Can we all give a thumbs up for such an initiative so that in future we will keep fighting out of hospital with diabetes? Apollo will not be happy with that statement. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks for the honor and opportunity. Next up, thank you. Feel free to take down my number and feel free to buzz me 24